Good morning, children. Today we will move to the third section of this chapter number 20, and today we will do the topics of scheduled caste and scheduled tribes. Okay, now first of all, understand who all are included in scheduled caste and scheduled tribe. In the Indian Constitution, first of all, a clear-cut definition is not given for who are included in scheduled caste. Okay, but then also in the constitution provisions have been made to prevent caste based exploitation, to wipe out injustice to them through equality and fraternity, and to see that they progress socially, economically, politically and educationally. Now our constitution want that these tribes, scheduled caste and scheduled tribe people, should come up. जो भी उनकी तरफ injustice हुए हैं वो अब ना हो, and they should also equality, fraternity सब हमारे कंट्री में ये दिखना चाहिए towards them also. तो कुछ ऐसे provisions उनके लिए बनाए गए हैं. According to Article 341, those caste included in the schedule are called scheduled caste. Article 341 में जो caste लिखी गई हैं, all that caste are included as scheduled caste. Now who are considered as scheduled tribe people? That is given in Article 342 of Constitution. People who live in forest or mountainous regions are included in scheduled tribes. They live in specific geographical conditions and live in different social and cultural life as compared to others. Now some people are living in totally mountainous areas or forest areas, interiors में रह रहे हैं, और पहले भी बताया है they have got their own culture, they have got their own traditions and customs. Okay, so these people are included as scheduled tribe people. They are economically and educationally backward people, isn't it? Education के नाम पे they are, we can say, totally zero. They don't know anything. Even they don't know the rules and regulations or the laws or how to live in the society. And they are economically backward people. They don't even, maybe some communities don't know what is money. पैसा क्या होता है, market क्या होता है, चीज़ें क्या होती है, they don't know. They have their own society, they have their own culture. They live on the this forest products what they collect. उन पे ही जीते हैं, खाते हैं. Okay, but they don't know anything about the society. So such people are considered as what? Scheduled tribes. Now our government, our constitution is trying to uplift this scheduled caste and scheduled tribe people, both the sections. Okay, so now some provisions have been made. Okay, there are some general provisions and some special provisions for these people. Now first of all we will study about the general provisions. कुछ general चीज़ें बताई गई हैं for these people. Now in Article 15, what is being written now? Article 15 restricts discrimination on basis of religion, community, birthplace, etc. Okay, no conditions can be imposed for entering public places. Okay, Article 15 क्या बोलता है कि discrimination नहीं होना चाहिए, no discrimination on basis of religion and community, and no conditions will be imposed on entering public places. Public places like what? Like restaurants are there, shops are there, hotels are there, या theaters are there. उसमें कोई restriction नहीं होगा for anybody. Even you, me can enter, even the people of scheduled caste and scheduled tribes can also enter these public places. Nobody can stop them. Secondly, for using public utilities which are completely or partially under state government or control. Even no restrictions on public utility things. Okay, again like wells are there, lakes are there, bathing places, roads are there. वो सब यूज़ करने के लिए भी किसी को भी restriction नहीं है. If they are coming under state government or central government या government aided institutions के अंडर में ऐसी कोई भी चीज़ें हैं तो no restrictions for anybody. Anybody can use such public utility things. Okay, now we will move to Article 29. Any Indian has a right to hold and preserve his own language, script or cultural setup of his own. Okay, अब इसमें भी कोई भी इंडियन हो वो अपना कल्चर बचाने के लिए, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट बचाने के लिए they can do it
होल्ड इट एंड प्रिजर्व इट एंड प्रोपेगेंडा ऑल्सो, उसका प्रोपेगेंडा भी कर सकते हैं. एवरीबडी हैज़ गॉट द राइट टू डू दैट. Admission cannot be refused on the basis of religion, caste, language by government or government aided institutions. This point I have explained earlier also. कि admission cannot be refused on the basis of religion or caste. Okay, in government schools या government aided schools or institutions. Private में कहीं पे ना बोल सकते हैं, but government में तो बिल्कुल भी नहीं. Nobody will be denied admission on the basis of religion, caste, language, creed, nothing. हाँ, परसेंटेज कम है, आई टोल्ड यू, तो एडमिशन के लिए मना कर सकते हैं, बट इन सब बेसिस के लिए एडमिशन के लिए मना नहीं की जा सकती है. नाउ वी मूव टू द स्पेशल प्रोविजंस फॉर दीज पीपल. नाउ इन स्पेशल प्रोविजंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इन आर्टिकल 46, व्हाट इज इट रिटन? Scheduled caste and scheduled tribe will be protected against social injustice and exploitation and will look after their educational, social and economic welfare. These people will be protected first of all against any injustice. उनकी तरफ कोई injustice नहीं होना चाहिए, कोई exploitation नहीं होना चाहिए, and they will be looked after, उनका education का, उनका social and economic welfare के ऊपर ध्यान देगी गवर्नमेंट. Article 16(4) empowers the state to make reservation in the government services for scheduled caste and scheduled tribe. Okay, even reservations can be set up by state government or central government for services. या seats reserve की जा सकती है in the educational department or in the service sector. So वो हक किसको है? State government or the central government, that they can fix up seats for them. Scheduled caste, scheduled tribe के लोगों के लिए number of seats can be reserved by government. Then Article 330, 332 and 334. Some seats reserved in Legislative Assembly and Parliament for scheduled caste and scheduled tribe. Even if they come up to stand in the elections और वो जीत जाते हैं, तो उनके लिए seats reserved भी हैं. कहाँ पे? Legislative Assembly में and in Parliament also. But no reservation of seats in राज्यसभा. राज्यसभा में कोई सीट रिजर्व नहीं है for scheduled caste and scheduled tribes. Even seats are reserved in ग्राम पंचायत and municipalities. Okay, वहाँ पे भी seats रिजर्व की गई हैं. Now apart from that, government has also opened what we say hostels हैं, school colleges खोल दिए हैं for such students. Even scholarships are given to such students of SC and ST. ट्रेनिंग क्लासेस शुरू कर दिए गए हैं. रेजिडेंशियल स्कूल स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे ये बच्चे कहीं दूर रहते हों, सपोज फॉरेस्ट एरियाज़ में या दूर गांव में रह रहे हैं, दे कैन कम अप टू द स्कूल. स्कूल में पढ़ाई भी करेंगे और वहीं स्कूल में उनके रहने का बंदोबस्त भी हो जाता है. सच आर नोन एज रेजिडेंशियल स्कूल्स और आश्रमशाला, वहाँ पे रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं. देन उनके लिए रिलैक्सेशंस भी होता है इन द फीस. जनरल कैटेगरी की थोड़ी फीस हाई होती है, उनको कम फीस देनी पड़ती है. ओके, एंड देन रिलैक्सेशन इन द एज स्ट्रक्चर. दे कैन अप्लाई, सपोज जनरल कैटेगरी कैन अप्लाई टिल द एज ऑफ सपोज 35, तो दीज पीपल कैन अप्लाई टिल द एज ऑफ 40. वो रिलैक्सेशंस भी हैं. नाउ Dr. Baba Saheb Ambedkar organization felicitates those persons who work for social understanding and upliftment of weaker section of population. Such awards are also given those who are working for such weaker section people. Then there is a separate division in the state and special officer is appointed at the central level for the welfare and protection of interest of these people. Special division बनाए जाते हैं, special commission बिठाई जाती है, okay, for benefit of such people. वहाँ के उनको सब हक मिले, उनको कोई टॉर्चर ना करे, उनके वेलफेयर के लिए सच कमीशंस बिठाई जाती हैं एट द नेशनल लेवल. नेशनल कमीशन इज फॉर्म्ड एट द सेंट्रल लेवल फॉर दीज पीपल. ओके, एंड डिफरेंट स्कीम्स आर ऑल्सो बीइंग स्टार्टेड. अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं, अलग स्कीम्स बनाई जाती हैं, सो दैट दीज पीपल स्टडी, दे गेट एजुकेशन, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली दीज पीपल कम अप. Now provisions for scheduled caste. Now according to Article 17, untouchability is totally eradicated and its practice is prohibited. Untouchability कोई भी practice नहीं कर सकता. It is totally eradicated from our society.
और अगर उसको कोई प्रैक्टिस कर रहा है देन ही और शी इज़ पनिशेबल। जो अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है isn't it, तो he or she is punishable. Then Article 25 states what? That state has given right to frame law or continue any existing law which permits the public institutions for social welfare or reforms to keep Hindu religious institutions open to all Hindus. अगर कुछ ऐसा लॉ बना हुआ है या उसको कंटिन्यू कर रहा है that permits the public institutions for social welfare or reforms for Hindus, isn't it? Hindus का रिफॉर्म करना है. Now Hindus will include Sikh, Jains and Buddhist. या कोई एग्जिस्टिंग लॉ भी है या उसको चेंज भी करना है तो इट अलाउज द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस फॉर सोशल वेलफेयर. तो उनको सबको सोशल वेलफेयर करना अलाउड है. ओके, सो दिस इज स्टेटेड इन आर्टिकल 25. Now some provisions for scheduled tribe. Now Article 19(5) empowers the governors of the state to impose restrictions in the interest of scheduled caste or the right to unrestricted movement of people to any region to settle down there, to acquire property or carry out trade. Now scheduled tribe या scheduled caste के जो लोग होते हैं अगर वो किसी mountainous areas में रह रहे हैं उधर उनका अपना सोसाइटी है. सोसाइटी मतलब उनका अपना बसा हुआ छोटा सा लैंड एरिया है. फॉरेस्ट एरियाज में वो दूर दराज रह रहे हैं तो गवर्नर चाहे या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आम जनता के लिए वहाँ पे जाना मना कर सकती है. मीन्स देयर द नॉर्मल पब्लिक कैन नॉट गो सेटल डाउन ओवर देयर. वहाँ पे हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं या हम वहाँ पे ट्रेड भी नहीं कर सकते हैं. उनकी एरिया में जाके ये सब चीज़ें रोक दी जा सकती है फॉर नॉर्मल पीपल इफ द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स इट. Such rights give authority to restrict exploitation in the tribal regions about land transactions, money lending and other exploitations of scheduled tribe people. People are so cunning, so money minded that they go to these areas और उनकी ही प्रॉपर्टी वहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज में जाके सेल कर देते हैं या वहाँ से कमाना हो तो वहाँ पे बिजनेस कर देते हैं. एंड दीज पीपल आर सो इनोसेंट. शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल इतने इनोसेंट होते हैं उनको कुछ पता भी नहीं है कि ये सब पैसा क्या होता है, लेना देना बेचना क्या होता है. दे डोंट नो. सो फॉर देयर प्रोटेक्शन गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड दिस लॉ कि वहाँ की प्रॉपर्टी, उनका घर, वहाँ पे जाके कोई बिजनेस नहीं कर सकता. वहाँ के वो वाले जो एरिया है वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना भी नहीं कर सकता है. दिस इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दोज पीपल. शेड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रोटेक्शन के लिए ऐसा रूल बनाया गया है बाय द गवर्नमेंट. Okay, so we see that various schemes and programs have been started by the government for the development of scheduled caste and scheduled tribe, backward class people. Okay, and because of all such efforts by the government, their condition is slowly and gradually improving. Okay, and they have got the chance to come up. उनका प्रोग्रेस हो रहा है. हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि वो सोशली एंड इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहे हैं. Okay, so now this topic of scheduled caste and scheduled tribe is given on page 171, 172 and 173 of your textbook. Again 2 or 3 marks questions are being asked. Whatever I have given here, written down over here in points, that the same points you can write down in your exams also. Okay, thank you beta. Have a look on all the points. Thank you. Have a nice day.